Hello students, today my topic is context-free grammar. This is the very important topic of the subject theory of computation. What is context-free grammar? तो context-free grammar बताने के पहले हम discuss करेंगे what is grammar. Basically, grammar contains the set of rules which is used for deriving the certain strings. CFG contains the set of rules to construct the valid sentences, and in set of rules, through this set of rules, we derive the strings. After that collection of strings, we find the languages. So grammar contains the set of rules. What is the CFG? Basically, in CFG, in the theory of computation, is a formal grammar defined by 4 tuples. CFG बेसिकली अगर हम बात करें components of CFG, there is 4 tuples. CFG, that is the G equals to B, T, P, S. G is the grammar. What is B? B is the variable. T is the terminal. P is the production, and S is the start symbol. Basically, context-free grammar is used for designing the valid strings, and this strings belongs to a particular language. So context-free grammar have 4 tuples. That is the B. What is B? Finite set of variable. Finite set of variable. What is T? Finite set of terminal. B is the variable, T is the terminal. What is P? P is the production rules. P is the production rules. P is the production rules. And what is S? S is the start symbol. S is the start symbol. So this is the context-free grammar. Context-free grammar have variable, terminal, production rule, and start symbols. Means context-free grammar have 4 components. One is the variable, second is the terminal, third is the production rule, and S is the start symbol. In context-free grammar, suppose the context-free grammar CFG G like this: A derive alpha. This is left hand side, and this is the right hand side. This is right hand side. A belongs to A. Only include only one variable or non-terminal. Here only one variable, and alpha belongs to the variable union terminal whole star. That means this here involves the variable also terminal. In alpha, in variable, this is the variable, and this is the terminal.
So suppose grammar is like this: a derive alpha. In left hand side, only one non-terminal. Always only one non-terminal or variable, and here this is the right hand side. Here alpha is the combination of variable, any combination of variable and terminal, variable and terminal. So come on the example, like example, suppose this is the context free grammar ASA, uh, ASB, ASB or F side. This is the context free grammar, and this is the, we can also write this in this form: S derive ASB, ASB. Also we can write through, yeah, this epsilon derived through the S, then S derive epsilon. We can also write this context free grammar in this form. And here is only one non-terminal, that is the, आपने पहले ही पढ़ा था कि जो ग्रामर होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, G is the collection of B, T, this is the variable, this is the terminal, this is the production, this is the start symbol. So in this case, the S, sorry, in this case B, variable include, what is the variable? Variable is yes, and this is also yes. Only one variable are there, here, that is the yes. What is terminal? Here involved terminal, that is A, B and epsilon. A, B and epsilon. This is the terminal. So variable is yes, terminal is A, B, epsilon. What is production? This is the production. Production include yes derive ASB and yes derive epsilon. This is the production. What is the start symbol? In this case, start symbol is, in this start symbol is only one symbol, that is yes. So we explain all the terms that are included in this grammar. इस grammar में जितने भी terms हैं, which one is the variable, which one is the terminal, which productions, which one is the start symbol, सभी को हमने easily बताया. लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि B, that is the variable, is also known non-terminal. ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, टर्मिनल स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे. प्रोडक्शंस, हमारे जो भी प्रोडक्शंस हैं जिससे हम स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शंस. और इसके बाद स्टार्ट सिंबल है. स्टार्ट सिंबल बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट सिंबल ऐसा है, और स्टार्ट सिंबल भी एक वेरिएबल है. ओके, तो सपोज अगर हम इस ग्रामर का यूज करके, सपोज दिस इज द ग्रामर, इस ग्रामर का यूज करके, दिस इज द ग्रामर ASB और एप्सिलॉन, इसका यूज करके हम कौन सी स्ट्रिंग डिजाइन कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है. तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको डिजाइन करें तो यस से क्या डिजाइन कर रहे हैं, यस से क्या डिराइव कर रहे हैं, ASB. और इसके बाद हमारे पास जो यस है, दैट इज द नॉन टर्मिनल, इसके प्लेस पर हम फिर इसको यस, दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन यस की जगह ASB, अगेन यस की जगह
ASB, और यस की जगह यस से हमारा अल्टरनेट एक और ग्रामर है दैट इज द एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन रख सकते हैं। इस केस से हमारी जो स्ट्रिंग डिजाइन होती है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। इसको ट्री के फॉर्म में अगर हम लिखें, ट्री के फॉर्म में, तो ट्री के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं एस से ए एस बी, एस से ए एस बी। और इस केस में देखिए एस से ए एस बी, पहला केस तो हमारे पास एस से एप्सिलॉन भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ए एस, यानी कि इस केस पे अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रिंग आएगी ए बी। अगर इसको हम और फर्दर एक्सप्लेन करें तो यस से ए एस बी और यस से ए एस बी, थ्रू दिस ग्रामर ए एस बी, यस के प्लेस पे हम ए एस बी रख सकते हैं और यस को एप्सिलॉन कर सकते हैं। तो इस केस पे हमारी जो स्ट्रिंग डिजाइन होगी दैट इज द डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ठीक है। अगर हम इसको और फर्दर एक्सप्लेन करें, यस से एस की जगह हम ए एस बी रखेंगे, देन फिर एस की जगह हम ए एस बी रख सकते हैं, ठीक है, और एस की जगह फिर से हम ए एस बी रख सकते हैं और एस की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं। यानी कि इस केस में जो हमारी ग्रामर जनरेट हो रही है 3 टाइम्स ए, दैट इज द टर्मिनल 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 टर्मिनल, यानी कि 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी, ये स्ट्रिंग डिजाइन हो सकती है। तो इस केस में जो हमारी लैंग्वेज हो रही डिजाइन हो रही है ए की पावर एन बी की पावर एन, ये लैंग्वेज हमारी जनरेट हो रही है। इट इज द वेयर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये हमारी लैंग्वेज जनरेट हो रही है। तो CFG से, इन दिस CFG हम ये लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं। इस CFG से, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमारे पास स्ट्रिंग डिजाइन हुई, ये स्ट्रिंग डिजाइन हुई, ये स्ट्रिंग डिजाइन हुई, ठीक है। और फाइनली जो हम लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं, लैंग्वेज इज ए की पावर एम बी की पावर। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, सपोज 0 यस 1 आर एप्सिलॉन, 0 यस 1 आर एप्सिलॉन। यहां पर देखिए कि हमारी जो ग्रामर है जो हमें रूल्स प्रोवाइड कर रही है दैट इज द बी टी पी एस, और ग्रामर जो हमारी लिखी जाएगी ग्रामर अल्फा डेराइव बीटा, इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अल्फा में केवल वन नॉन टर्मिनल होगा और बीटा में वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर अगर इस ग्रामर को मैच करते हैं इस केस पे तो यस ओनली वन नॉन टर्मिनल। इस केस में देखिए टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस ग्रामर, ये ग्रामर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इस कंडीशन के बेस पे चेक कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इसको अगर हम डेरिवेट करें कि किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट होगी, कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होती है, ठीक है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं यस 0 यस 1, और यस के केस पे हम एप्सिलॉन नल टर्मिनल, इस केस पे देखिए 0 और 1, ये स्ट्रिंग हमारी डिजाइन हो रही है 0 1। इसके बाद अगर इसको और हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो 0 यस 1 और यस को एप्सिलॉन, यानी कि ये स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो रही है 0 0 1 0 0 1 1। इसको और अगर आगे हम बढ़े तो यस 0 यस 1 0 यस 1 इस केस पे
ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। यानी कि यहां पर देखिए आप 10 दैट 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 3 टाइम 0 3 टाइम 1, मीन्स जितने भी हमारे जीरो आ रहे हैं उतने ही हमारे 1 आ रहे हैं। तो इस केस में जो हमारी लैंग्वेज जनरेट होगी, इस केस में लैंग्वेज जो हमारी जनरेट होगी दैट इज 0 की पावर n 1 की पावर n where n is greater than or equals to 0, this. Okay, thank you.